गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत शृण्वन्नोतभिः सीदसादनम् प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजनीवती दीनामवित्रयवतो गणेशाय नमः सरस्वत्यै नमः श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवाहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नमो भगवते रुद्राय ॐ नमस्ते रुद्रमन्यव उतोत इषवे नमः नमस्ते अस्तु धन्वने बाहुभ्यामुत ते नमः यात इषु शिवतमा शिवं बभूव ते धनुः शिवा शरव्या यातवतया नो रुद्रमडया या ते रुद्र शिवा तनूरघोरा पापकाशिनी तया नस्तनुवाशन्तमया गिरिशन्ताभिजाकशीः यामिषुं गिरिशन्तहस्ते बिभर्षस्तवे शिवां गिरित्रतां कुरु माहि गुंसेः पुरुषं जगत शिवेन वचसा त्वा गिरिशाचावधामसि यथा नः सर्वमिज्जगत यक्ष्मगं सुमना असत अध्यवोचदधिवक्ता प्रथमो देव्योऽभिषक अहेग्यश्च सर्वान् जम्भयन्त् सर्वाश्च यातु धान्यः असो यस्ताम्रो अरुण उत बभ्रुः सुमङ्गलः ये चेमागुं रुद्र अभितो दिक्षु श्रिता सहस्रशो वैशागुं हेडयीमहे असो यो वसर्पति नीलग्रीवो विलोहितः उतेनं गोपा अदृशन्नदृशन्नुदहार्यः उतेनं विश्वा भूतानि सदृष्टो मृडयतिनः नमो अस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीरुषे अथो ये अस्य सत्त्वानोऽहं तेभ्यो करन्नमः प्रमुञ्च धन्वनस्त्वमुभयोरात्मीयोर्जाम् याश्च ते हस्त इषवः पराता भगवो वपा अवतत्यदनुस्त्वगं सहस्राक्षशुधे शुधे निशीर्य शल्यानां मुखा शिवो नः सुमना भव विज्जं धनुः कपर्दिनोऽभिशल्यो बाणवागम् उत अनेशन्नस्येषव आभुरस्य निषङ्गतिः या ते हे धर्मे दुष्टमहस्ते बभूव ते धनुः तयास्मान् विश्वतस्त्वमयक्ष्मया परिभुज नमस्ते अस्त्वायुधाय नातताय धृष्णवे उभाभ्यामुत ते नमो बाहुभ्यां तव धन्वने परिते धन्वनो हेतिरस्मान् वृणक्तो विश्वतः अतो य इषुदिस्तवारे अस्मन्निदेहितम् नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यम्बकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः नमो हिरण्यबाहवे सेनान्ये दिशाञ्च पतये नमो नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यः पशूनां पतये नमो नमः सस्पिञ्जराय त्विषीमते पथीनां पतये नमो नमो बभ्लुषाय विद्याधीनेनां पतये नमो नमो हरिकेशायोपवीतिने पुष्टानां पतये नमो नमो भवस्य हेत्ये जगत्तां
पतये नमो नमो रुद्राय ततादिने क्षेत्राणां पतये नमो नमः सूताय हन्त्याय वनानां पतये नमो नमो रोहिताय स्तपतये वृक्षाणां पतये नमो नमो मन्त्रणे वाणिजाय कक्षाणां पतये नमो नमो भुवन्तये वारिवस्कृतायौषधीनां पतये नमो नमः उच्चैर्घोषाय क्रन्दयते पत्तीनां पतये नमो नमः कृत्स्नवीताय धावते सत्त्वनां पतये नमः नमः सहमानाय नव्यादिन आव्यादिनीनां पतये नमो नमः ककुभाय निषङ्गिणे स्तेनानां पतये नमो नमो निषङ्गिन इषुधिमते तस्कराणां पतये नमो नमो वञ्जते परिवञ्जते स्तायूनां पतये नमो नमो निचेरवे परिचरायारण्यानां पतये नमो नमः श्रिकाविभ्यो जिगागं सत्भ्यो मुष्णतां पतये नमो नमो सिमद्भ्यो नक्तं चरभ्यः प्रकृन्तानां पतये नमो नमः ऊष्णीशिने गिरिचराय कुलुञ्चानां पतये नमो नमः इषुमद्भ्यो धन्वाविभ्यश्च वो नमो नमः आतन्वानेभ्यः प्रतितधानेभ्यश्च वो नमो नमः आयश्चद्भ्यो विसृजद्भ्यश्च वो नमो नमो स्यद्भ्यो विद्यद्भ्यश्च वो नमो नमः आसीनेभ्यश्च यानेभ्यश्च वो नमो नमः स्वपद्भ्यो जाग्रद्भ्यश्च वो नमो नमः स्तिष्ठद्भ्यो धावद्भ्यश्च वो नमो नमः सभापतिभ्यश्च वो नमो नमो अश्वेभ्यो अश्वपतिभ्यश्च वो नमः नमः आव्याधिनीभ्यो विविद्यन्तिभ्यश्च वो नमो नमः उगणाभ्यस्त्रिगंहतिभ्यश्च वो नमो नमो घृत्सेभ्यो घृत्सपतिभ्यश्च वो नमो नमो व्रातेभ्यो व्रातपतिभ्यश्च वो नमो नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च वो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्च वो नमो नमो महत्यः क्षुल्लकेभ्यश्च वो नमो नमो रतिभ्यो रतेभ्यश्च वो नमो नमो रथेभ्यो रत्तपतिभ्यश्च वो नमो नमः सेनानीभ्यश्च वो नमो नमः क्षत्तर्भ्यः सङ्ग्रहीतर्भ्यश्च वो नमो नमस्तक्षभ्यो रथकार्येभ्यश्च वो नमो नमः कुलालेभ्यः कर्मारेभ्यश्च वो नमो नमः पुञ्जिष्टेभ्यो निषादेभ्यश्च वो नमो नमः इषुकृभ्यो धन्वकृभ्यश्च वो नमो नमो मृगयुभ्यः श्वनीभ्यश्च वो नमो नमः श्वभ्यः श्वपतिभ्यश्च वो नमः नमो भवाय च रुद्राय च नमः शर्वाय च पशुपतये च नमो नीलग्रीवाय च शितिकण्ठाय च नमः कपर्दिने च व्युप्तकेशाय च नमः सहस्राक्षाय च शतधन्वने च नमो गिरिशाय च शिपिविष्टाय च नमो मीरुष्टमाय चेषुमते च नमो रसवाय च वामनाय च नमो प्रहते च वर्षीयसे च नमो वृद्धाय च संवृद्ध्वने च नमो अग्र्याय च प्रथमाय च नमः आशवे च जिराय च नमः शीघ्रियाय च शेव्याय च नमः ऊर्म्याय च वस्वन्याय च नमः श्रोतस्याय च द्वेद्याय च नमो ज्येष्ठाय च कनिष्ठाय च नमः पूर्वजाय च परजाय च नमो मध्यमाय च पगर्भाय च नमो जघन्याय च भूत्नीयाय च नमः सोऽभ्याय च प्रतिसर्याय च नमो
याम्याय च क्षेम्याय च नमः उर्वर्याय च खल्याय च नमः श्लोक्याय च वसान्याय च नमो वन्याय च कक्षाय च नमः श्रवाय च प्रतिश्रवाय च नमः आशुषेणाय च शुरताय च नमः शूराय च वबिन्दते च नमो वर्मिने च वरुतिने च नमो बिल्मिने च कवचिने च नमः श्रुताय च श्रुतसेनाय च नमो दुन्दुभ्याय च हनन्याय च नमो धृष्णवे च प्रमृषाय च नमो दूताय च प्रहिताय च नमो निषङ्गिने चेषु धीमते च नमः तीक्ष्णीषवे च युधिने च नमः स्वायुधाय च सुधन्वने च नमः श्रुत्याय च पत्याय च नमः काट्याय च नेप्याय च नमः सूध्याय च सरस्याय च नमो नाध्याय च वेशन्ताय च नमः कूप्याय च वत्याय च नमो वर्षाय च नमो मेघ्याय च विद्युत्याय च नमः ईध्रियाय च तप्याय च नमो वात्याय च रेश्मियाय च नमो वास्तव्याय च वास्तुपाय च ॐ हर 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 ॐ नमः सोमाय च रुद्राय च नमः ताम्राय च रुणाय च नमः शङ्गाय च पशुपतये च नमः उग्राय च भीमाय च नमो अग्रे वदाय च दूरे वदाय च नमो हन्त्रे च हनीयसे च नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यो नमस्ताराय नमः शम्भवे च मयो भवे च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः स्थित्याय च खूल्याय च नमः पार्याय च भार्याय च नमः प्रतरणाय चोतरणाय च नमः आतार्याय च लाद्याय च नमः षष्प्याय च फेन्याय च नमः सिकट्याय च प्रवाह्याय च नमः हिरण्याय च प्रपत्याय च नमः किगंशिलाय च क्षयनाय च नमः कपर्दिने च पुलस्तये च नमो कोष्ठाय च कृत्याय च नमः स्तल्प्याय च गेग्याय च नमः काट्याय च गवरेष्ठाय च नमो हृदयाय च निवेश्याय च नमः पागं सव्याय च रजस्याय च नमः शुष्क्याय च हरित्याय च नमो लोप्याय चोलप्याय च नमः उर्व्याय च सूर्म्याय च नमः पर्ण्याय च पर्णशत्याय च नमो पगुरमाणाय च भिघ्नते च नमः आखिदते च प्रखिदते च नमो वक्किरिकेभ्यो देवानागं हृदयेभ्यो नमो वीक्षिणकेभ्यो नमो वीक्षिन्वट्केभ्यो नमः आनिरहतेभ्यो नमः आमीवट्केभ्यः द्रापे अंधसस्पते दरिद्रं नीललोहिता येषां पुरुषाणाम् येषां पशूनां माभेर्मा रोमो येषां किंचना ममता या ते रुद्र शिवा तनो शिवा विश्वाह भेषजी शिवा रुद्रस्य भेषजी तया नो बृरजीवसे इमागुं रुद्राय तवसे कपर्दिने क्षयद्वीराय प्रबरामहे मतिं यथा न शमशद्विपते चतुष्पते विश्वं पुष्टं ग्रामे अस्मिन् नातुरम् मृडानो रुद्रो तनो मयस्कृति क्षयद्वीराय नमसा विधेमते यच्चं च योश्च मनुरायजे पिता तदश्यम तव रुद्र प्रणीतो मानो महान्तमुत्तमानो अर्भकं मान उक्षन्तमुत्तमान उक्षितं मानो वदी पितरं मोत मातरं प्रियामानस्तनुवो रुद्ररीरिषः
मानस्तोके तनये मान आयुषि मानो गोषु मानो अश्वेषु रीरिषः वीरान् मानुरुद्रभामितो वदिरः विष्मन्तो नमसा विधेमते आरात्य गोग्न उत पूरुषग्ने क्षयद्वीराय सुम्नमस्मे ते अस्तु रक्षा च नो अधि च देवा ब्रूयदा च न शर्मा यच्चत् द्विबरः ष्टुहि श्रुतं गर्सदं युवानं मृगान्नभीममुपहत्नुमुग्रं मृडाचरित्रे रुद्रास्तवानो अन्यन्ते अस्मन्निवपन्तु सेनाः परिणो रुद्रस्य हेतर्वृणक्तु परितेशस्य धुर्मतिरगायोः अवस्थिरा मघवत्पयस्तनुष्वमीध्वस्तोकाय तनयाय मृडया मीरुष्टमशिवतमा शिवो न सुमना भव परमे वृक्ष आयुधन्निदाय कृतं वसान आचर पिनाकं बिभ्रदागहि विकिरित विलोहित नमस्ते अस्तु भगवः यास्ते सहस्रगं हेतयोऽन्यमस्मन्निव पन्तु ताः सहस्राणि सहस्रदा बाहुवो स्तव हेतयः तासामीशानो भगवः पराचीनामुकाकृति सहस्राणि सहस्रशो ये रुद्रा अधिभूम्यां तेषागं सहस्रयोजने वधन्वानि तन्मसि अस्मिन् महन्त्यन्नवेऽन्तरिक्षे भवा अधि नीलग्रीवाशितिकण्ठाः शर्वा अधः क्षमाचराः नीलग्रीवाशितिकण्ठा दिवगुं रुद्र उपश्रिताः ये वृक्षेषु सस्पिञ्जरा नीलग्रीवा विलोहिताः ये भूतानाम् अधिपतयो विशिकास कपर्दिनः ये अन्येषु विविद्यन्ति पात्रेषु पिपतो जनानां ये पथां पतिरक्षय एलभृदाय व्युदः ये तीर्थानि प्रचरन्ति श्रिकावन्तो निषङ्गिनः य एतवन्तश्च भूयागंसश्च दिशो रुद्रावितस्थिरे तेषागं सहस्रयोजने वधन्वानि तन्मसि नमो रुद्रेभ्यो ये पृथिव्याम्येऽन्तरिक्षे ये दिवि येषामन्नं वातो वर्षमिषवस्तेभ्यो दश प्राचीद्दश दक्षिणादश प्रतीचीद्दशोदीचीद्दशो द्वास्तेभ्यो नमस्ते नो मृडयन्तु तेयं द्विष्वयश्च नो द्वेष्टितं वो जम्भे दधामि त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् यो रुद्रो अग्नो यो अप्सु य ओषधीषु यो रुद्रो विश्वा भुवना विवेश तस्मै रुद्राय नमो अस्तु ये ते सहस्रमयुतं पाशा मृत्यो मर्त्यया हन्तवे तान् यज्ञस्य मायया सर्वानवायजामहे मृत्यवे स्वाहा मृत्यवे स्वाहा प्राणानां ग्रन्थिरसि रुद्रो मा विशान्तकः तेनान्येनान्त्यायस्व नमो रुद्राय विष्णवे मृत्युर्मे पाहि तमुष्टुहि अस्विषु सुदन्वायो विश्वक्षयति भेषजस्य यक्ष्वा महेशो मनसाय रुद्रं नमो भीर्देवमसुरं दुवस्य अयमे हस्तो भगवान् अयमे भगवत्तरः अयं मे विश्वभेषजो यगं शिवाभिमर्षणः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः शं च मे मयश्च मे प्रियं च मे नुकामश्च मे
कामश्च मे सोमनशश्च मे भद्रं च मे श्रेयश्च मे वशश्च मे यशश्च मे भगश्च मे द्रविणं च मे यन्ता च मे दर्ता च मे क्षेमश्च मे धृतिश्च मे विश्वं च मे महश्च मे संवित् च मे ज्ञात्रं च मे सुश्च मे प्रसुश्च मे शिरं च मे लयश्च मरुत्तं च मे अमृतं च मे यक्ष्मं च मे नामयच्च मे जीवातुश्च मे दीर्घायुत्वं च मे नमित्रं च मे भयं च मे सुगं च मे शयनं च मे सुषा च मे सुदिनं च मे स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। शान्ति शान्ति शान्तिः। अम्बिकतनया गजानना गजवदना गणनाथ गजानना गजवदना गणनाथ गजानना पाहि गणेश विनायका पाहि गणेश विनायका त्रिभुवन पालक मंगलदायक त्रिभुवन पालक मंगलदायक
आई गणेश विनायका अंबिकतनया गजानना गजवदना गणनाथ गजानना आई गणेश विनायका त्रिभुवन पालक मंगलदायक विद्या बुद्धि सिद्धि प्रदायक पाई गणेश विनायका पाई गणेश विनायका पाई गणेश विनायका अंबिकतनया गजानना
प्रेमस्वरूपिणि
शम्भो हे शिव शङ्कर नमामि शङ्कर शिव शङ्कर शम्भो हे शिव शङ्कर नमामि शङ्कर शिव शङ्कर शम्भो हे शिव शङ्कर नमामि शङ्कर शिव शङ्कर शम्भो हे गिरिजापति भवानी शङ्कर हे गिरिजापति भवानी शङ्कर हे गिरिजापति भवानी शङ्कर हे गिरिजापति भवानी शङ्कर शिव शङ्कर शम्भो 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 हे शिव शङ्कर नमामि शङ्कर शिव शङ्कर शम्भो हे शिव शङ्कर नमामि शङ्कर शिव शङ्कर शम्भो हे गिरिजापति भवानी शङ्कर हे गिरिजापति भवानी शङ्कर शिव शङ्कर शम्भो 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 हे शिव शङ्कर नमामि शङ्कर शिव शङ्कर शम्भो मदन मोहन श्याम सुंदर 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 मदन मोहन मोर मकुटधारी मोर मकुटधारी मोर मकुटधारी मोर मकुटधारी माधव हरि माधव हरि माधव गिरिधारी 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 श्याम सुंदर मदन मोहन श्याम सुंदर मदन मोहन मोर मकुटधारी मोर मकुटधारी मोर मकुटधारी मोर मकुटधारी माधव हरि माधव हरि माधव गिरिधारी 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 माधव ओ माधव हरि माधव गिरिधारी माधव ओ माधव हरि माधव गिरिधारी श्याम सुंदर मदन मोहन श्याम सुंदर मदन मोहन श्याम सुंदर मदन मोहन श्याम सुंदर मदन मोहन मोर मकुटधारी मोर मकुटधारी मोर मकुटधारी मोर मकुटधारी माधव हरि माधव हरि माधव गिरिधारी माधव हरि माधव
మదన మోహన శ్యామ సుందర మదన మోహన మోర మకుటధారి మోర మకుటధారి మోర మకుటధారి మోర మకుటధారి మాధవ హరి మాధవ హరి మాధవ గిరిధారి 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 శ్యామ సుందర మదన మోహన శ్యామ సుందర మదన మోహన మోర మకుటధారి మోర మకుటధారి మాధవ హరి మాధవ హరి మాధవ గిరిధారి మాధవ హరి మాధవ హరి మాధవ గిరిధారి ॐ तत्सत् श्रीनारायण तु पुरुषोत्तम गुरु तु सिद्धबुद्ध तु स्कन्दविनायक सविता पावक तु सविता पावक तु ब्रह्ममज्जतु यहोव शक्ति तु येषु पिता प्रभु तु रुद्रविष्णु तु रामकृष्ण तु रहीमताओ तु रहीमताओ तु वासुदेव गो विश्वरूप तु चिदानंद हरि तु अद्वितीय तु अकाल निर्भय आत्मलिंग शिव तु आत्मलिंग शिव तु आत्मलिंग शिव तु असतो मा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमया मृत्योर्मा अमृतं गमया ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः I offer my most humble pranams at the lotus feet of our beloved Bhagavan Baba and my loving Om Sai Rams to one and all. Welcome to this morning's Sunday bhajan. Thank you to all the centers for submitting these beautiful bhajans rendered this morning. Swami says, and I quote, "Love as a thought is truth. Love as an action is right conduct. Love as a feeling is peace. Love as understanding is non-violence. Love is selflessness. Selfishness is lovelessness. Love gives and forgives. Selflessness gets and forgets." Satya Sai Speaks, Volume 5. The Go Green infographic for this week. Devotees are encouraged to start a recycling station at home. Man's misadventures have created several problems for the entire mankind. He has polluted the 5 elements, causing havoc on earth. There is pollution everywhere, in the air, water, food, and so on. Satya Sai Baba.
This morning, the 108 experience is going to be shared by Sister Paddy. My loving pranams at the lotus feet of Bhagavan Baba. Om Sai Ram. Om Shri Sai Siddha Sankalpaya Namaha 87, whose word is immediately effective. With the grace of Swami, our family was blessed in December 2000 to be at his lotus feet for the Christmas celebration. We arrived at Puttaparthi at around 4 p.m. and we realized the place was unusually quiet. The shops were closed. Both the ashram gates were closed. I prayed to Swami as to what we should do. Then as we got to the Ganesha gates, with the grace of Swami, we met our region's Seva convener. He told us that Swami had left to Whitefields about a week ago and the ashram was now closed. The Christmas crowd and the Sevadals were all at Whitefields. He suggested we leave immediately as accommodation was going to be a challenge. When we got to Whitefields to the ashram, there was no available accommodation. All the hotels and the guest houses were all fully booked in the area. It was so late and we needed to rest. We prayed to Swami to please help us. With the grace of Swami, the taxi driver managed to get us something for the night, as that place was booked for the week ahead. We thank Swami again for getting us through the night. The next day, we attended the morning program. Thereafter, I joined the darshan lines, still praying about what we should do for the duration of our stay. As I got seated in the darshan line, I was at the front of the row, having the wonderful opportunity of picking up the token for our row, which was row number 1. I immediately felt uplifted, knowing that everything was going to be okay, as Swami was spending Christmas at Whitefields after 20 years. We then started to move into the mandir to get seated. After a little while, Swami walks down the aisle from the back of the ashram, taking letters and giving beautiful darshan. Then, to my amazement, Swami comes and stands right in front of me, looking towards the back, giving darshan to the devotees at the back. The Sevadals were now handing Swami letters, and Swami looked at me and he smiled. I was so close to Swami that I had close eye contact and just looked at Swami. The Sevadal was so close to me, I could not move. All I could do was just enjoy that moment. It was the most beautiful experience of a lifetime. Swami, so close to me, almost near my knee, on the red carpet. I continued to pray with folded palms, giving thanks. Swami stood for a little while more, and then he started to move forward, taking letters, giving darshan, and then he got seated for bhajans. After that moment, I could not concentrate. I was thinking of that most beautiful experience, which I will always treasure for the rest of my life. After the bhajans and arati was over, I decided to go back to the accommodation office and try again. There were 2 Sevadals at the counter, and immediately they said to me
there was no available accommodation till after Christmas. I prayed to Swami to please help us as I stood so disappointed being refused accommodation. After a little while, a gentleman came from one of the rooms behind the counters. He came up to me and he said, "You need accommodation. I will give you. Where is your passport?" I replied that I didn't have the passport. He said to me, "Go and bring your passport and come back as quickly as possible." I managed to get the passports and I came back in a short while. I went back to the counter where the two Sevadals were, and I said to them that the gentleman asked me to get my passports and come back for accommodation. They said to me that they were the only two Sevadals that was responsible for the allocation of rooms, and they continued with their duties. I still continued to wait and I prayed to Swami. After a while, the gentleman arrived. He came up to me and he looked at me and he says, "Do you have your passports? Follow me." And then he took us to the office on the side and he asked us to sit. He took all the necessary details. I still continued praying to Swami and I thanked the gentleman so many times, because this was only with the will of Swami that this was happening. He got us to pay and he handed us the keys to a room in the C3 block. I prayed for all the devotees that were coming in and being refused accommodation. We managed to get our luggage into the room and come back for the afternoon darshan. As we were leaving the mandir, we met a devotee from Newlands, and he said to us, "Please send your children for practice for the Christmas program. It's okay, the rehearsals had started on the 17th, but it's okay for them to join because it was just carols." Here again, with the grace of Swami, my children joined the Christmas program. I was so overjoyed that Swami had come to my rescue every time I called his name. So we have to talk to Swami, thank Swami as often as possible, and give thanks even for little things in our life. And we need to trust that Swami will be there to take care of us every moment. Jai Sai Ram. The announcements for this week are: Sunday morning devotional online program continues. Morning sadhana commences at 5:30 a.m. Havan commences at 7 a.m. This Sunday's Havan was conducted by the Karistan Sai Center. The group devotional session commences at 7:30 a.m. Veda chanting classes are held every Sunday from 9:15 a.m. Please take note that new Balvikas registration is taking place. For more information, please contact Sister Seema. Diarize: a Balvikas parent meeting is going to be held on the 6th of February. Balvikas children are encouraged to continue with the collection of bread clips and bottle caps and continue writing the Likhi Japa. The Go Green activities of our region. Devotees are encouraged to continue planting your vegetable and herb gardens and planting of speckboom. Also, making of eco bricks. There is a seva
that is titled We Can Serve the Satya Sai School. And all you have to do is collect cans and paper, and all the proceeds will be given to the Satya Sai School. For more information, please contact Brother Pulen. Loving Sai Rams. Right from birth, we are constantly involved in action. No one can escape action. Bhagwan Sri Satya Sai Baba says that there are only two types of actions, one that binds and one that liberates. Seva or service has always been an integral part of spiritual practice or sadhana and of spiritual institutions. In many places of worship, food is prepared and served regularly as part of the spiritual activity, and cleaning of the premises is taken up voluntarily. Some people prefer to bring up orphaned children and look after all their needs. Service can be done in 1,000 different ways. Bhagwan Baba was born in a small village called Puttaparthi way back in the year 1926. His life was a saga of selfless service to humanity. He never differentiated between the rich and the poor, or people of different nationalities, religions, and castes. One of his fundamental teachings is love all, serve all. Love and service are like the two wings of a bird, he would say. His love has touched and transformed millions of lives. In the 1960s, he set up the Sri Satya Sai Seva organization, which runs on these two principles of love and service. Love for God and for fellow men is invariably reflected as service. Puttaparthi today is an international center. Baba's ashram is called Prashanti Nilayam, the abode of supreme peace. People visit Prashanti Nilayam from all over the world to find peace and bring purpose to their lives. Visiting Prashanti Nilayam has become an annual pilgrimage or a biannual pilgrimage for many families. A
Apart from being a spiritual hub with regular prayer sessions, Prashanti Nilayam is also a center for service. Free educational institutions and free hospitals have been running here for several decades. In this big yajna of service, Baba has given an opportunity to one and all for participating and sanctifying their own lives. Speaking of Seva, Baba says, నీ సేవ నీ భవిష్యత్తుకు ఒక ఉత్తమమైనటువంటి స్థితిని అందిస్తుంది. నేను సేవ చేస్తున్నాను అనేటువంటి అహంకారంతో కాకుండా భగవంతుడు నాకు ఇట్టి పవిత్రమైనటువంటి సేవాభావంను సేవాకర్మను నాకు అనుగ్రహించాడని ఆనందంతో నీవు సేవ చేయటానికి పూనుకో. ఏది చేసినప్పటికీ తనకు తాను చేసుకున్నట్టుగా భావించుకొని సేవ లోపల మనం పూనుకోవాలి. ఒక చిన్న ఉదాహరణము, నీ ఇంటికి ఎవరైనా ఒక మిత్రుడు వచ్చాడు. ఆ మిత్రుడు వచ్చిన తక్షణమే హలో కమాన్ కమాన్ అని చెప్పి నేను డ్రాయింగ్ రూమ్ లోకి తీసుకెళ్లి కూర్చోబెట్టి ఒక కప్ కాఫీ ఇచ్చేసేసినావు. కానీ ఈ దృశ్యము ఆ వచ్చినటువంటి మిత్రుని యొక్క చిత్తము లోపల హత్తుకొని పోతుంది. తదుపరి నీవు అతని గృహమునికి ఎప్పుడైనా వెళ్ళినప్పుడు అతను కూడా నువ్వు కమాన్ కమాన్ అని పిలిచేసేస్తాడు. తిరిగి ఆ కప్ కాఫీ నీకు ఇస్తాడు. కనుక ఈనాడు నీవిచ్చినటువంటి కాఫీ నీవు హెల్ప్ కోసం కాదు, భవిష్యత్తులో నీకు రిటర్న్ అవుతుంది. అట్లు కాకుండా ఎవరైనా ఒక మిత్రుడు ఏ విధమైనటువంటి ఆధారము లేకుండా ఎవరు సహాయము లేనటువంటి స్థితి లోపల హాస్పిటల్ లోపల ప్రవేశించాడనుకో, అప్పుడు నీవు వెళ్ళి అతనికి అనేక రకములైనటువంటి సేవలే నీవు చేసినావంటే ఏనాడైనా కూడాను మనకు అట్టి పరిస్థితి ఏర్పడినప్పుడు తిరిగి ఆ మిత్రుడు వచ్చి తప్పక నీకు ఆ యొక్క సేవను అందిస్తుంటాడు. కనుక ఈనాడు చేసినటువంటి సేవ మన నిమిత్తమై భవిష్యత్తులో మనం భద్రం చేసుకున్నామే కానీ పరులకు చేశాము మనం సేవ అనేటువంటి యొక్క ప్రతిఫల నిమిత్తమై మనం ఏమాత్రం కూడా ఆశించరాదు. కనుక మనం ఏమి చేసినా, మంచి చేసినా చెడ్డ చేసినా తనకు తాను చేసుకున్నట్టుగా భావించుకున్నప్పుడు తాను చెడ్డ చేయడానికి ఏమాత్రం కూడా నువ్వు పూనుకోడు. The Sri Satya Sai Seva organization has followed the lofty ideals set by Baba and has been rendering selfless service to society ever since its inception. Thousands of medical camps, village service activities, free primary and secondary schools, training activities, water projects, and distribution of food and clothing have been done under its banner. Apart from all these activities, more than 700 volunteers from different parts of India assemble every fortnight to participate in the Prashanti Seva. I have started my first Seva in 1970 in Prashanti Nilayam. ये स्कार्फ अपने आप में एक पवित्र है जिसको हम भगवान का आभूषण समझते हैं और वो आभूषण पहनने से हमें पवित्रता महसूस होती है. तो जब हम स्कार्फ बैच पहनकर लोगों का निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं, प्रेम से सेवा करते हैं, चाहे हमारी ड्यूटी कहीं भी लगती है, चाहे वो हनुमान टॉप हो, चाहे इंडोर स्टेडियम हो, चाहे जनरल हॉस्पिटल हो, चाहे सुपर हॉस्पिटल हो, हम लोग जहाँ भी काम करते हैं हमको कोई नाम की, प्रतिष्ठा की, पद की, गौरव की कोई बात नहीं होती. 24 घंटे रात में भी हम लोग सोते नहीं, तो हमको कोई देखता नहीं है पर हमको स्वामी देखते हैं. This opportunity to do seva is open to one and all. There is no differentiation based on criteria like social background, language or religion. Just as everyone is eligible to receive service, everyone is eligible to serve. The scarf has a badge which contains our emblem, that is unity in faith. All major 5 religions are there, and at the bottom of this badge it is written, work is worship and duty is God. So for me and for all Sevadal member, we are worshipping our duty.
Baba says that everything in this world is based on reflection, reaction and resound. Thus, if you do seva with the feeling of serving God in the recipient in turn sees God in you. बीच में एक महिला थी, सुपर हॉस्पिटल में आई और वो एकदम हंसने लग गई। बोले माँ क्यों हंस रहे हो आप? आपका बच्चा बीमार है, उसका ऑपरेशन होने वाला और आप इतने प्रसन्न क्यों हैं? बोले ये स्कार्फ बैच पहन के ये स्वामी ने मेरे को बोला है, ये स्वामी है, स्कार्फ बैच पहने हुए जो सेवा दल है वो स्वामी है और इसने मेरे को बोला है कि मेरा बेटा जो है वो ठीक हो जाएगा। और यहाँ रहकर और एक चीज हमारे अंदर आती है सेवा दल के अंदर कि गॉड इज, ईश्वर है और वह जो है हमेशा हमारे साथ में है और हम ईश्वर के साथ में सेवा कर रहे हैं। Seva can be done in any part of the world and at any time. But doing seva in Prashanti Nilayam has its incomparable benefits, oftentimes beyond our reckoning. Speaking of the sanctity of Prashanti Nilayam, Baba once told a devotee that one act of merit or punya done in this holiest of places will accrue the merit of doing 1,000 such acts in any other place. However, he also added that one act of sin will also have a similar multiplying effect. मेरा पति बंद था, 10 साल की सज़ा थी, 10 साल की सज़ा हुई, पाउडर में बंद था। इसीलिए हम यहाँ आए तो मेरा पति 7 साल में घर आगे, हम यहाँ से सेवा से घर गया तो मेरा पति आगे मिल गया। अच्छा, तो इसीलिए हम यहाँ आते, बाबा के यहाँ सेवा करते हैं, 7 दिन की ड्यूटी करते हैं, हमको अच्छा लगते हैं बाबा। हमारे घर में हर सब शांति, दारू हारू पीता तो भी हमारे दारू पानी सब खत्म, नहीं पीता है अब, बहुत आराम मिला, बाबा ने दिया। There are thousands of such incidents where Baba's love and grace have literally transformed and saved families. His compassion is truly limitless. He inspires us to do seva, creates the opportunity for seva, and protects all those who participate in it selflessly. I was coming out of the hospital. After a long day's work, as Dr. Raghava Reddy drove out of the hospital, an auto rickshaw which his car was following suddenly turned left, forcing him to turn further. His car ran off the road and hit a pole, which stopped it from entering a deep ditch. There were thorny bushes all around, and the bonnet was completely smashed. Luckily, the driver's door opened and he carefully got out. He came out of the car completely unscratched. He rushed to Baba to thank him. Swami, nannu save chesaru Swami, na life ni Immediately, Swami said, seva chese valani save chestanu kada. My service in the hospital has been recognized by Swami and my life is fulfilled. He not only saves those who do seva, but goes one step further. In the mid-1990s, Baba had launched the iconic drinking water project that would benefit more than 700 drought-prone villages in the Anantapur district of Andhra Pradesh. As the project was underway, and a few villages started getting pure drinking water, the village heads decided to visit Puttaparthi to personally thank Baba. As Baba approached them, they knelt down and started saying, "Baba, we are very grateful to..." But before they could complete their sentence, Baba said, No, it is not you who should be grateful. I am grateful to you for giving me this opportunity to serve." They were totally spellbound by Baba's reply and sat down shedding tears of gratitude and love. That was a lesson in humility
that true seva brings. Baba would often say that Lord Hanuman is the first Sevadal. He constantly chanted the Lord's name and incessantly did the Lord's work. It is no wonder that Baba placed his statue over the statues of all the other gods. For Baba, the devotee always comes first. Selfless seva is indeed the royal path to finding a permanent place in God's heart. ॐ जय जगदीश हरे स्वामी सत्य साई हरे भक्त जना संरक्षक भक्त जना संरक्षक पति महेश्वरा ॐ जय जगदीश हरे शशिवदना श्रीकरा सर्वा प्राणपते स्वामी सर्वा प्राणपते आश्रित कल्पलतिका आश्रित कल्पलतिका आपतान्धवा ॐ जय जगदीश हरे मातपिता गुरुदैवमु मरियन्तयु नीवे स्वामी मरियन्तयु नीवे नाद ब्रह्म जगन्नाथ नाद ब्रह्म जगन्नाथ नागेन्द्रशयन ॐ जय जगदीश हरे ओंकार रूप ओजस्वी हो साई महादेवा सत्य साई महादेवा मंगल आरती अंधुको मंगल आरती अंधुको मंगल गिरिधारी ओम जय जगदीश हरे नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम जय सद्गुरुदेवा नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम जय सद्गुरुदेवा नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम जय सद्गुरुदेवा शांति 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 समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु शांति 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 जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की जय।
मोक्षप्रदानं बाबा विभूतिम् इदमाश्रयामि परमं पवित्रं बाबा विभूतिं परमं विचित्रं लीला विभूतिं परमार्थइष्टार्थमोक्षप्रदानं बाबा विभूतिम् इदमाश्रयामि परमं पवित्रं बाबा विभूतिं परमं विचित्रं लीला विभूतिं परमार्थइष्टार्थमोक्षप्रदानं बाबा विभूतिम् इदमाश्रयामि। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। 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 ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्।